लगा कि आंसर बताओ, जो फ्लो में जा रहा है वो चीज को महसूस करो, आंसर तो आपको और मजा आएगा समझने में। क्या आपको लगता है कि एक एक साल के बाद सर ने बताया कि बहुत बढ़िया बिजनेस हो चुका है तो सर ने ज्वाइन किया होगा? No. ये No. दिमाग लगा रहे हो आप। Not only the next year, the year after, and the year after, and the year after, and the year after, and the year after. For 15 years, he have been looking for me. यानी कि ऐसा नहीं एक साल के बाद, दूसरे साल, तीसरे साल, 15 साल तक सर ने वो पूछते रहे, फॉलो करते रहे, टच बनाते रहे, ऐसा किया। And I kept saying to him, no, 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 for 15 years. 15 साल तक नो बोला मार्कस सर ने, एमोस सर को। And just right about 18 months ago, I went up to this gentleman. For the very first time, he didn't look for me, I looked for him. और 18 महीने पहले वो खुद उनके पास गए, ना कि एमोस सर इनके पास आए। I said, bro, I'm ready for the business now. Are you ready for me? उन्होंने सामने से बोला कि मैं आप जो बता रहे थे वो बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मेरे लिए रेडी हो क्या? And then he says, I'm ready for you, bro, but there is another news I want to tell you. उन्होंने बोला कि मैं रेडी हूँ, लेकिन और एक समाचार है आपके लिए मेरे पास। We are going to restart Kangen Water again. उन्होंने बोला कि हम पहले से कैंगन वाटर का बिजनेस फिर से रिस्टार्ट What? What do you mean restart Kangen Water again? उन्होंने पूछा कि क्या बोल रहे हो, पहले से स्टार्ट करोगे मतलब क्या? We're going to restart, like as though I met you 15 years ago. We're going to restart that again. उन्होंने बोला कि 15 साल पहले जो मैं आपसे मिला था, बात की थी, वो फिर से करने वाले हैं। But how? How are you going to restart the whole thing again? उन्होंने बोला कि यार कैसे, पहले से कैसे आप करोगे? Because we're going to launch a new product. उन्होंने बोला कि क्योंकि हम एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। And bro, you have one opportunity right now. और आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। If you start doing the business right now, अगर आप अभी बिजनेस करना चालू कर रहे हो, you can be just like me 15 years ago. यानी कि आप जो मैं 15 साल के पहले था, वो आप भी अभी बन सकते हो। That's how I first know about the MGAT business over here. और पहली बार उन्होंने उस टाइम पे एमगार्ड बिजनेस समझा। And I went into the business, I got so excited and I worked and I worked and I worked. जैसे ही बिजनेस समझा वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत बार वो देखते रहे, समझा पूरा ध्यान से। Just right about 2 months ago, और 2 महीने पहले ही I've been awarded the top sales in Malaysia. और वो टॉप सेलर थे मलेशिया। एक बार जबरदस्त कहते हैं। By the grace of God over here, I've just checked with my colleague over here, and I also happen to be our team. The last 2 months happen to be 50% of Malaysia production right now for the MGAT. और अभी उन्होंने चेक किया कि लास्ट 2 महीने का अगर हम सेल का ट्रैक देखें तो 50 साल से ज्यादा प्रोडक्शन उनका खुद का हो रहा है। Ladies and gentlemen, are you ready to hear the secret on how to actually make it in the MGAT business? सब लोग सुनना चाहते हो कैसे वो कर रहे हैं? I cannot hear you. Are you ready to hear the secret on how to make it? And guys, this secret, if you catch it, is going to make a huge difference in your business. And this secret that you catch it later, the next 2 speakers that's about to come up to share something with you is going to be very, very, very exciting for your business journey over here. अगर आप ये सीक्रेट कैच कर पाए, अगर आप ये समझ पाए, तो आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया आगे लेके जा पाओगे। So take this particular secret with you. अगर आप रेडी हो ये सीक्रेट को लेने के लिए, And prepare to listen to the next 2 speakers. आप प्रिपेयर्ड हो आने वाले भी 2 स्पीकर को सुनने के लिए। And make sure to take the MGAT business. एमगार्ड बिजनेस आगे लेके जाने के लिए रेडी हो। And restart. मैंने कि कोरोना के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स चालू किया और वो बहुत पॉपुलर हो गया। Almost 2,000 people sign up for my course online. उनके कोर्स के लिए 2000 लोगों ने साइन अप कर लिया। That's where my head became very big. I thought, wow, I'm doing very well when other people are struggling in the lockdown period. उनको ऐसा लगा कि जब लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यार मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया ये। And then what happened was I convinced a group of my partners, why don't we go all out and buy over a college license, because the college was for sale. उन्होंने सबसे आजू बाजू उनके जो भी थे उनसे बात किया कि क्यों ना हम एक कॉलेज के लिए पूरा लाइसेंस ले लेते हैं। And we did. We bought over a college. उन्होंने एक पूरा कॉलेज खरीद लिया। My business started to have a downfall after that. उनका जो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था वो पूरा एकदम जीरो हो गया। The reason for that is simply because, ladies and gentlemen, that in Malaysia, starting a new college or university is a very difficult business.
यानी कि मलेशिया में एक नया कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना ये बहुत कठिन है We have a stringent requirement in Malaysia, और बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है and the ministry. And 2 years after that, 2 साल के बाद I lost my life savings. उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई The business had to close. बिजनेस पूरा बंद हो गया And to make things worse, I even lost my house that I was actually staying in. और इतना खराब लॉस हुआ कि उनका खुद का घर भी चला गया I even lost the car I was driving. उनके पास कार थी वो भी चली गई And there were times I go back home and ask my wife, darling, did you cook today? वो घर पे जाके अपनी बीवी से पूछते थे कि क्या आपने खाना बनाया है आज She said, no, I didn't cook. Wow. I just have to settle with just drinking water and go to sleep. मतलब दिन ऐसे आ गए थे कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे Ladies and gentlemen, that happened to me 18 months ago. ये 18 महीने पहले का स्टोरी है बहुत पुराना भी नहीं है 18 months ago, when the whole thing happened to me, I was a depressed man. 18 महीने पहले वो बहुत डिप्रेस्ड इंसान थे I am very, very fortunate because I have a very good wife. वो बहुत लकी अपने आप को लकी समझते हैं फॉर्चुनेट समझते हैं क्योंकि How many of you guys, you have also a good wife with you? Can you raise your hand? for उनके पास me? अच्छी wife है। Yeah. Appreciate your good wife. तो उसको आप अप्रिशिएट किया My wife is the strong one. उनके वाइफ बहुत स्ट्रांग है Now that we lost everything, she was the one that ordered the mover on the very day that I lost my house. She was the one who ordered the movers to move everything out of the house so that we can go to a relative house to stay. जैसे ये सब चीज़ें हुआ तो उन्होंने ही पूरे मूवर्स और पैकर्स यानी कि जो लोग वो पैकिंग करते हैं उनके सामान और उनके रिलेटिव के यहाँ पे रहने के लिए उन्होंने ही सब रेडी किया Everything gone. Everything gone. सब कुछ चला गया 18 months ago. 18 महीने पहले की बात And I remember I seen a view of my wife. I want to share that moment with all of you guys. उन्होंने कभी भी ऐसा देखा नहीं था उनकी वाइफ को ऐसा My wife was lying on a bed in a relative house. उनकी वाइफ उनके रिलेटिव के घर पे लेटी हुई थी Her face facing the wall. दीवार की तरफ मुंह था She wasn't talking to me. उनके साथ नहीं बात कर रही थी She's just mumbling and talking to herself. वो अपने आप से बात कर रही थी She said one sentence in Cantonese and it's called Siu Sai La. In direct translation basically means it's all gone now. दीवार को देखते देखते उनकी वाइफ बोली कि यार ये तो सब चला गया Tears run down her cheek. रोने लग गई थी It broke my heart to see my wife like this. ऐसा देख के उनका दिल ठहर गया बैठ गया And I asked my wife one question. Darling, एक सवाल उन्होंने उनकी वाइफ से पूछा what shall I do now? अभी क्या करना चाहिए And my wife said one thing to me. और एक ही चीज उनकी वाइफ ने उनको बताई You want to know what is the one thing she said to me? क्या जानना चाहते हो एक चीज जो बताई You want to hear? 3 words. 3 बातें बोली 3 शब्द बोले सॉरी Go find Amos. सिर्फ 3 शब्द बोले वो- आप जाओ अमोस को Amos. Go find Amos. Go find Amos. Go find Amos. All right, darling. I will look for Amos. Nothing to lose because they've been looking for me for 15 years anyway. This is going to be the first time I'm going to look for him, and I'm going to go for it. So I go find Amos, and he shared the opportunity to me. Now, ladies and gentlemen, this was one shot and one opportunity. यानी कि एमस सर जो 15 साल से ऑलरेडी उनको ढूंढ रहे थे अब उनको जाना बहुत इजी था यानी कि ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी जो उनकी वाइफ ने बोली उनके वाइफ ने एक ही बात बोली कि आप एमस सर के पास जाओ और वो गए I told myself I am going to work in a different level than ever before. और मैं अभी एकदम अलग लेवल पे काम करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने लाइफ में नहीं किया And this level, does any one of you guys know what this level is called? अब ये लेवल क्या कहलाता है क्या आप सब लोग जानना चाहते हो I'm going to reveal the secret to all of you guys. If you start working in this level, you can do exactly the same thing here in India for your team over here. And I'm going to share with you the level is called, this is the secret, ladies and gentlemen. Get ready and write it down. ये सीक्रेट आप लिख सकते हो वो जो शेयर करने वाले हैं वो लेवल कौन से लेवल से उन्होंने काम किया
A stands for all. O stands for out. Wrong spelling. M stands for massive. And A stands for action. All out massive action. Everybody repeat together with me. 1, 2, 3, go. All out massive action. One more time, go. All out massive action. One more time, higher energy with you. I say, God, I'm depressed and I'm thinking stupid thoughts in my head right now. If death is gonna knock through my door, then let me work till my death. If death is gonna knock through my door, and let me work till my death. So what I did was I went all out massive action. All out massive action. It doesn't matter what happened to me, because what matters is I go all out massive action over here. To put food on the table for my family, I went all out massive action. Ladies and gentlemen, I start taking my first appointment at 7 a.m. in the morning. First appointment. I finished my last appointment at 12 a.m. at the midnight. I've been working like this for the last 18 months. And I work, and I work, and I work, and I work, and I work. There were times I got high fever. The Almighty One. उन्होंने काम कैसे किया? पहला अपॉइंटमेंट सुबह 7 बजे चालू होता है और लास्ट अपॉइंटमेंट रात को 12 बजे खत्म होता है. पिछले 18 महीने से उनका ये रिकॉर्ड रहा है. एक बार क्लैपिंग हो जाए उनके वर्क. There are times I got high fever and I continue working. जब उनको तेज बुखार हो जाता था कि कंटिन्यू इतना काम करते करते, Because there was someone very important in a small island called Penang that I need to meet. मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट था जिनको उनको मिलना था. And today, that particular leader is one of my core leader that is giving me almost 20% of my production in Penang. और इतना वो हार्डवर्क इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको वो जिनसे मिल रहे थे वो आज उनके पूरे टीम का 20% सेल करते हैं. I worked. There was this particular time I have asthma attack. And I remember that day I was having the Ventolin puff in my pocket. I was puffing 10 times in one single day, Ventolin puff. यानी कि उनको इतना ज़्यादा उनका कंडीशन